So we've been listening from Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, chapter 18, where Mahaprabhu is ecstatic in the absorbed in Prem, and he is in Vrindavan, and Mahaprabhu himself is describing the glories of Vrindavan. महाप्रभु राधा कुंड की राधा कुंड और कृष्ण कुंड की प्रकाश आदि की ये सब कथा हम लोग श्रवण किया. So we've heard how Mahaprabhu himself manifested. और गौरी खेत और काली खेत में जाकर के महाप्रभु Radha Kunda and Shama Kunda, स्नान करके Gauri Kheta and विचार किया. ये काली खेत कृष्ण Kali कुंड Khet, और this blackish place where they are गौरी खेत planting rice, like a में प्रकाशित. flooded area. So this is Kali Khet, Shama Kunda, and Gauri Khet is Radha Kunda. और गोविंद लीलामृत ग्रंथ में कहा गया जी राधे व हरिस तोरिय सरसी प्रेमा अद्भुति सही गुणी यशा सिजुत माधवेन्द्र सुंदर निशम कृत्वा तया क्रियति प्रेमा अस्मिन् तत् राधिकैव लभते यशां सकृत सानकृत तस्सा वै महिमा यथा मधुरिमा केनास्तु वर्णितो. यह राधा कुंड सरोवर श्री राधा जी की भांति अपने अद्भुत गुणों से श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है. So Radha Kunda is so dear to Krishna. श्री कृष्णचंद्र सदा राधा रानी के साथ Krishna is always making pastimes with Srimati Radhika एक बार स्नान करने in Radha Kunda. If you take shower, bath once in Radha Kunda, श्री कृष्ण में अर्थात राधा जी का जैसे प्रेम होता है प्राप्त होता है just like इसीलिए Krishna will give you some kind of ecstatic love, just like Srimati Radhika's. महिमा का कौन वर्णन कर सकता है. এই মত स्तुति करे प्रमविष्ट हया हे नित्य करे श्री कुंड लीला स्मरिया कुंडेर मृत्तिकालया तिलक परिला Verse 14. संगे लैया. इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु So like this, Chaitanya राधा Mahaprabhu, कुंड की स्तुति कर रहे थे. he was making prayers to Radha Kunda. कुंड पर होने वाली श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके And उसको तट पर नृत्य कर रहे थे. he was remembering the deeds of Krishna and dancing at the banks of Radha Kunda, Shama कृष्ण Kunda. की मिट्टी को लेकर अपने शरीर में Mahaprabhu तिलक लगाए. took this mud of Radha Kunda and put this in his body. उन्होंने कुंड And by the help of मिट्टियों को ले Balabhadra Bhattacharya, Mahaprabhu took this अपने स्थान mud of the Radha Kunda and took to his place. तवे चली आईला प्रभु सुमन सरोवर कहाँ गोवर्धन देखी होइला बिहल. Verse 15. गोवर्धन देखी प्रभु होइला दंडवत एक शिला अलंगिया होइला उन्मत्त. तब राधा कुंड से चलकर श्रीमान महाप्रभु कुसुम सरोवर पर आ गए. Then after Mahaprabhu came to Kusum Sarovar, दर्शन करके there he saw Govardhan हो गए. and he was absorbing Prem. श्रीमान महाप्रभु ने When the Lord saw Govardhan hill, he immediately offered obeisances, falling down on the ground like a rod. He embraced one piece of rock from Govardhan hill and became mad. बता रहे यहाँ पर सुमन सरोवर कहने से Here when it's saying Suman Sarovar, you must understand it's Kusum Sarovar. शब्द अर्थ है कुसुम. Suman Sarovar actually means Kusum. प्रेमे मत्त चली आईला गोवर्धन ग्राम हरिदेव देखिता होइला प्रणाम. मथुरा पद में पश्चिम दली जहाँ जार वास हरिदेव नारायण आदि परकाश. हरिदेव आगे नाचे प्रेमे मत्त हयान सब लोग देखते आईला भट्टाचार्य आश्चर्य सुनिया.
प्रेम में मत्त श्रीमन महाप्रभु absorbed in Prem, Mahaprabhu सरोवर से from Kusum Sarovar. गोवर्धन ग्राम में आ गए। He came to the village of जहाँ Govardhan, महाप्रभु ने श्री हरिदेव के दर्शन करके where Mahaprabhu had the darshan of Haridev and did obeisances, like obeisances, pranam. हरिदेव का वास है तथा श्री नारायण Harideva is a Narayana is a incarnation of Narayana. मत्त होकर श्री हरिदेव के आगे नृत्य करने लगे। Mahaprabhu started dancing in front मधुर रूप देख करके of the deity of Haridev. लोग Haridev is an incarnation of Narayana, and his residence is on the western petal of the lotus of Mathura. देखने लगे। Everybody hearing of the Lord's wonderful activities, all the people came to see him. जब प्रेम में उन्मत्त होकर के So when Mahaprabhu was dancing, absorbed in Prem, तो महाप्रभु के नृत्य दर्शन करने के लिए so many people, लोग billions of people came and gathered to see his dance, to watch his dancing. Watch his dancing. भट्टाचार्य ब्रह्मकुंडे एकमा पागयात्रा कोइल अरे ब्रह्मकुंडे स्नान करी प्रभु भिक्षा कोइल श्रीमान महाप्रभु के प्रेम तथा सौंदर्य को देखकर Seeing this Prem of Mahaprabhu and his beauty, हो गए हैं। people became so amazed. हरिदेव के सेवकों ने महाप्रभु के बहुत आदर और And सत्कार भी किया। these persons were serving the Haridev, this deity. भट्टाचार्य They ब्रह्मकुंडे offered to Mahaprabhu a good reception, like they welcomed him like this. प्रभु भिक्षा कोइल पदयात्रा में रसोई बनाना है। ब्रह्मकुंड में बलभद्र के द्वारा रसोई So बनाना और महाप्रभु के स्नान और भोजन at Brahmakunda, the Bhattacharya cooked food, and the Lord, after taking his bath at Brahmakunda, accepted his lunch. रसोई बनाई और महाप्रभु के ब्रह्मकुंड में स्नान करने का बाद After Mahaprabhu taking shower in Brahmakunda, he took prasadam. पाक मने Pak. सब्जी बनाए Pak means to cook, like sabji, to sabji, rice. This is pak, this word here. से रात्रि रहिला हरिदेव मंदिरे रात्रि महाप्रभु करे मनेते विचारी गोवर्धन उपरे आमी कबुना चढ़िब गोपाल रहे दर्शन केमने पाइब এই মত প্রভু এই মত মনে করি প্রভু মৌন করিলাম জানিয়া গোপাল মৃচ্ছ ভয় ভঙ্গি উঠাইলাম श्रीमान Mahaprabhu, उसी रात that same night, हरिदेव के मंदिर में रहे। he stayed in the temple of Haridev. रात में विचार करने लगी In night, he was thinking, तो कभी नहीं चलूंगा। I'll never go up, तब किस and like, I'll never go climb, I'll not go on top of the Govardhan hill. किस प्रकार हो But then how I'll be able to have the darshan गोपाल को प्रकाश of कराया, Gopal? प्रकट कराया विराज गोवर्धन के ऊपर। Since I shall not any time climb Govardhan hill, how shall I be able to see Gopal? गोवर्धन के ऊपर This Gopal, the deity manifested by Madhavendra Puri. वृंदावन जाइबे ना दिवे चिरकाल गोवर्धन चढ़िया ना दिखिबे गोपाल। Mahaprabhu said, ने कहा he said, वृंदावन जाओ if you go to Vrindavan, वृंदावन में don't be in Vrindavan for a long time, otherwise you have Marta Buddhi, विराज गोवर्धन के दर्शन करो कैसे like you may commit some offense to Dhamavasis and etc. तुम्हारे पैर And also if you go to Govardhan, शिला में लग न जाए। don't step on the top of the stones of Giriraj, स्वरूप because Giriraj is directly the form of God. हमारे आचार्य Giriraj has two forms, एक भक्त Acharyas explain, as like a devotee, Bhakta Swarup, and also like the God, Bhagavat Swarup. এই মতে করি প্রভু মৌন করি রহিলা জানিয়া গোপাল মৃচ্ছ ভয় ভঙ্গি করাইলা। इस प्रकार
मन में विचार करके Thinking this way, the Lord remained silent, and Lord Gopal, knowing his contemplation, played a trick. और महाप्रभु के मन की बात को जानकर साक्षात गोपाल जी ने मृत्यु के भय की चाल चली। उस समय So Gopalji himself, by the fear of the Muslims, मंदिर और ठाकुर जी विग्रह आदि तोड़ते थे। Gopal, he left that place where he was staying on the top of Giriraj. मुसलमान के विचार के अल्लाह Because the Muslims, they were breaking, like they were destroying all the Hindu temples. Because the Muslims think that Allah is God but has no form. And those who worship the form of God, ऐसे मुसलमान they think this is a bad thing. So भ्रांत this is their illusion, their illusionate conception. So they break down the Hindu's temple. पर विरोध करने लगे। So the Muslims, they go against the Hindu dharma, विग्रह की because against the Hindus, because the Hindus, they serve the deity according to the Shastra, the deity of God, मुसलमान लोग उसके and the Muslims, they are against it. इसलिए यहाँ पर महाप्रभु के मन को बात को जानकर But so knowing the mind of Mahaprabhu, Gopal himself, the deity, चाल चली। by fear of the Muslims, Gopal left where he was staying. The deity changed place. अनुरक्षते शैलम समय समय एकाधि मानिने अवरुद्ध गिरि कृष्णे गौराय समद दर्शयत। अतः गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर मैं नहीं चलूंगा, ऐसे प्रतिज्ञा से युक्त और मैं कृष्ण भक्त हूँ। Coming down from Govardhan Hill, Lord Gopala granted an interview to Mahaprabhu, who was unwilling to climb the hill, thinking himself a devotee of Lord Krishna. उतर कर दर्शन दिए। ग्रंथकार चैतन्य चैतन्य ग्रंथकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी। So in this book, Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, he's saying, ये उस समय लोग विचार करने लगे। how people at that time, they were thinking, the Muslims, हिंदू के विरोधी है। they are against the Hindus. इसलिए गोपाल भी उसी प्रकार So Gopal, the deity, he manifested that past वैसे by the fear of the militias, fear of Muslims. नीचे Gopal came down from the top of Giriraj, like afraid that, why did he come down? Actually, just to give darshan to Mahaprabhu. गांठोली ग्राम कहा जाता So that place he came down to is Ghatoli Gaon, this place. When we do the Govardhan Parikrama, we come to this place, Golal Kunda, Ghatoli Gaon, all these places are there. अन्नपूर्ण में गोपाल गोपाले स्थिति राजपूत लोके सही ग्रामे बसती। गोपाल उस समय गोवर्धन में Gopal stayed in a village called माने Anakut Gram on Govardhan Hill. अनूर Also Anur. विराजमान थे तथा The villagers who lived in that village were mainly from Rajasthan. भक्ति रत्नाकर में भी इसमें भी Bhakti Ratnakar also explains. गोपी बुझाओ जेनो कुतुक अपार इह तु अनर नाम हृदय अन्नपूर्ण स्थान यह देखो श्रीनिवास ए स्थान दर्शन है पूर्ण अभिलाष। इस स्थान पर वो गोपियों के श्री कृष्ण Here, के all the स्थान Gopas and Gopis enjoyed wonderful pastimes with Shri Krishna. Therefore, this place is called अनोर ग्राम Anur. माने और लाओ Anur means bring more, bring more. गिरिराज गोवर्धन When Krishna lifted Giriraj Govardhan जो अन्नकूट किया था and did the Anukut Mahotsav. और उसी के स्मरण करके So, remembering this Leela, on the remembrance of this Leela, this village was founded. इस निवास इस अन्नकूट के स्थान को देखो। इस O स्थान को Srinivas, दर्शन करने whoever sees this वाले place has all his desires का fulfilled. सब पूर्ण हो जाता है। श्रीनिवास जी को लेकर के कौन गिरिराज गोवर्धन So, who did parikrama with Srinivasacharya? है? वहाँ पर हम लोग जाते हैं ना Where we go there, स्थली, in the Rasa जहाँ Sthali, पर
पुछरी लोटा What is this? Puchari Lota. After Puchari यहाँ Lota, पर महाप्रभु के परिकर वो रात that associate of Mahaprabhu used to stay there. दस नाम पूजा Just the name I forgot. उन्हें महाप्रभु के लिए क्या बोले ये श्रीवास आचार्य भी लेकर के So he took Srinivasa Acharya राज गोवर्धन की and he did the Govardhan Parikram उनको श्रवण कराया and told Braj Katha to him. मैं Raghava Pandit श्रीनाथ जी के मंदिर है was the name of this associate. Near to the temple of Srinath, there's this place of this associate of Mahaprabhu, where he sit down in the Rasasthali there. लाल वृक्ष की There is a tamal tree, very beautiful tamal tree, and also वो वृक्ष के नाम another tree, that one, what is the name? कदम वृक्ष के Kadamba tree also. कदम वृक्ष So there is one Kadamba tree and another कमाल वृक्ष tamal tree, like a pair of trees always. जो है So Raghava Pandit. राघवेर गुफा भी कहा So there is the Raghaver Gufa, means the cave of Raghava Pandit there. Is a very beautiful place. When you see this place, it's such a beautiful place, isn't it? उसके पीछे So just behind the temple of Srinath Ji, पंडित का there's the गुफा मिलेगा cave, the Gufa of Raghava Pandit. So he used to stay there like a little bit down, doing his bhajan. श्रीनिवास जी को So he, Raghava Pandita, took Srinivasa Acharya to do the Giriraj Purikrama. प्रभु Just like Nityananda Prabhu, he also took Jiva Goswami महात्मा श्रवण and told him the glories of Navadvip Dham. So in the same way, जो Raghava Pandit, when the devotees used to come at that time, लेकर के he used to take them to की महिमा Giriraj Parikrama and explain the glories of Giriraj. करें So that's why here in this shloka says, इस स्थान पर गोपर गोपियों की श्री कृष्ण के स्थान here all the gopis and gopas enjoyed wonderful pastimes with Shri Krishna. इसलिए Therefore, this place is Anur. अनोरे और चावल Anur, bring more rice महामहोत्सव में in the Anukut Mahotsav celebration. स्वयं भगवान कृष्ण एक स्वरूप में गिरिराज Bhagavan Krishna, in one form, he was on the top of Giriraj. In another form, यशोदा Krishna was with gopis, Jashoda, the Vrajavasis. And Krishna said, look, today Giriraj Govardhan directly. He's accepting साथ को कैसे the prasada, which are you offering, अत्यंत आदर with so much respect, और भोजन करके करें और like so much honor. He's taking your prasad and still asking for more. इसलिए वो स्थान के चैतन्य महाप्रभु इस अन्नकूट के स्थान को देखो और इस स्थान के प्रदर्शन करने वाले Whoever sees this place has all his desires fulfilled. हो जाती है सब ब्रजविलास तब में सुलभ In Vrajavilasa Stava, Raghunadas Goswami states, कुन्नेर निकार दिखा निबिड़ कनान हिताय गोपाल छिदा होया संगुपान और राघव पंडित करने लगे देखो Raghava Pandita said, के निकट near to इस this सघन वन को देखो kunda, look, यहाँ गोपाल शिव कर रहा था Gopal is written here. एक दिन आसी रात्रे ग्रामीण के बोलिलन तुम्हारा नाम मारी तुम्हार ग्राम मारिते तुलुक धारी साजिल আজি রাত্রে পলাহ না করিও একজন ঠাকুর লয়া ভাগ আসিবে কালী জমন জবন एक व्यक्ति ने रात्रि के समय यहाँ पर आकर One person nighttime came to the village and informed, the Turkish soldiers के ऊपर आक्रमण are now preparing to attack your village. मुसलमान The Muslims, Turkish आज रात को Muslim. भी तुम सब यहाँ से भाग जाओ Flee this village tonight and do not allow one person to remain. Take the deity with you and leave, for the Muslim soldiers will come tomorrow. जवान लोग काल यहाँ पर आएंगे वास्तव में क्या है Actually, this was the Leela of Gopal. निकाले यहाँ पर लिखा तुरुक Here we see this word Turuk. है यहाँ पर कहना
ये तुरुकधारी सजिलो Turuk. तुम्हारे ग्राम मारी ते तुरुकधारी सजिलो तुरुक शब्द क्या है एक विशेष मुसलमान जिसको तुर्की मुसलमान Turuk पठान कहा जाता means this Turkish Muslim soldiers. You know, Turkestan, Turkey. People very है कट्टरवादी समझते हैं Kattarvadi. Do you know what is that? ये लोग भगवान के विग्रह को नहीं मानते They don't even accept कीर्तन करने नहीं the dates of Lord. They don't accept Namas and Kirtan. Like very hard. हैं तुर्किस्तान है ना Turkestan. तुर्किस्तान You know, Turkestan we call Turkey in English. है छिप करके रहते हैं वहाँ पर बहुत नियम बहुत Yeah, the devotees they try to hide there, but there's so many rules. मुसलमान जो है They have because एक बार मैं तो मेरा वो गिद्दी गुच्छ ना वो once कौन सा बुक there was a book. Which one? बुक में केवल एक तिलक के चिन्ह है There was just the mark of the tilak, एक तिलक चिन्ह क्यों है एक है क्या and they said, "What is this mark in this book?" हजारों प्रश्न पूछने They did 1,000 questions because मुसलमान जो है so these Muslims they're पाकिस्तान का जगह very hard, very strict, very how do you say? जब वो कनेक्शन When we have some connection flight coming to these countries like Kazakhstan, all these places of Muslims, I've seen बहुत they're very like कट्टरवादी orthodox or like कहते हैं we say तुर्किस्तान extremalista. How do you say that in Portuguese? Like, extreme. They're too much extreme. इस्लाम And छोटे strict. छोटे ना वो कविता छोटे छोटे पढ़ते थे When I was Mo, या तुर्की लोग जैसे बुलबुली के धान के जे we used to read something like this about Turkey. ये सब छोटे छोटे जो है The small हैं वर्गीय लोग जैसे ये समस्त जो है मुसलमान लोग दुष्ट जो है the Muslims, they are all bad people. सब लूटपाट करके लेकर जाते थे Actually, they और steal लूटपाट everything, करके भी तथापि शांति नहीं है and they are not और वो happy कहते हैं जो of only stealing. They also want taxes. हिंदुओं के घर में जाकर के They go to the house of Hindus अत्याचार करते and they do terrorist हैं acts like beating and killing people, के ऊपर जो है stealing, अत्यंत and also खूब व्यवहार do bad things with the ladies. They did. इतिहास This history knows what Muslims did. भारतवर्ष ऐसे एक India स्थान है जहाँ is पर such a place सहिष्णुता का अधिकार है। That is so much tolerance. The Indians are so tolerant. इतने दुष्ट लोग How many भारतवर्ष bad में people, बार-बार how आए many kinds of, so many kinds of bad people came to India and they stole everything from India and they did so many terrorist acts against India. किंतु उसको कौन But still, वर्णन करे who can describe, who can say? But the history says, भारत के India, इतिहास पर the history of India, if you read, you'll know, you understand. उस समय Because at that प्राचीन time, काल में in the भारत में ancient कितने times, समृद्ध धन संपत्ति because India had so much wealth before, so much इसमें wealth. सारे So that's why all of these Westerners, like people from outside, they came slowly, and they stole everything देश में and brought to their own countries. मयूर सिंहासन और क्या Like वो Mayur मणि- Simhasan, I don't know, some kind of सब throne भारतवर्ष of की सब peacock, I don't know, sorry, or some jewels, very gems, you know. It's all किंतु ये this समस्त लोग wealth from कैसे India. जबरदस्ती करके But forcefully, these people came and took everything. तो इसी प्रकार भी यहाँ पर कह रहे हैं So here we see the time of Mahaprabhu. ये तुर्क अर्थात एक This विशेष Turuk मुसलमान is जाति one kind of तुर्की Muslim अथवा from पठान Turkey, कहा जाता है। or Pathan also called. वो लोग बहुत कठोर होता है They're very strict, इसलिए extreme. ग्रामवासियों के कहने के देखो तुर्कधारी तुर्की वेशधारी घुड़सवार So- सेना से लेकर के आ रहे हैं The Turkish soldiers are now preparing to attack your village. गांव के छोड़ करके चले जाए बा छुप जाए Flee this village tonight and do not allow one person to remain. रसमे गोपाल लया गाठली ग्रामे थुइला यह के सुनकर ग्राम के लोग चिंतित हो गए Listening to this, the people of the village became उन्होंने so सबसे anxious. पहले They first took गोपाल को Gopal लेकर and moved him to a village known as Gantuli छिपा दिया गाठुली गांव and है, kept him hidden there in Gantuli, जहाँ पर गुलाल कुंड है, where there is the Gulal Kunda अथवा राधा कृष्ण के अनेकों जो है
लीला आदि वर्णन करते And many Leelas of Radha Krishna actually happened in this place, Garntuli. राधा कृष्ण एक ही साथ में बैठे Once Radha Krishna, they were sitting together, and the Sakhis, एक दूसरे के कपड़े के साथ they गांठ बंधन कर दिया they- ये करके विवाह के जो क्या they bound their clothes together, गान and they started singing songs of marriage, करने लगी of wedding. तब राधा जी बोले क्या बात है Of wedding ceremony, sorry. And then Radha and Krishna, they saw, and they tried to go away from each other, but their clothes were tied with a knot, like bounded with a knot, प्रपौत्र bound with a knot. उन्होंने Their clothes वहीं पर जो गांव बैठाया were bound उस गांव के नाम with लिखा a knot. So, कांचुली ग्राम लिखा so the great grandson of Krishna, Vajranabh, came there after and made this village. He made this village. He founded this village called एक Garntuli घर Gaon. और वह समझते जो लोग गांठुली गांव के लोग क्या की So the people of Garntuli Gaon, निवृत्त सवान राम उजाड़ होइल पलाइल सर्वजन एक ब्राह्मण के घर पर एकांत में the Gopal deity was kept in the house of a Brahmana, and his worship was conducted secretly. Everyone fled, everyone left, and thus the village of Anakut was deserted. होई छे मृत्यु भय गोपाल भागे बारे बारे मंदिर छाड़ी कुंजे रहे किबा ग्रामांतरे इस प्रकार मृत्यु की Due to fear of the Muslims, the Gopal deity was moved from one place to another again and again, thus giving up his temple. Lord Gopal would sometimes live in a bush and sometimes in one village after another. बदलते रहते ठाकुर जी की लीला है This is the Leela of Thakurji. भगवान की ऐसी लीला प्रेममय भगवान God is full of prem, full of Leelas, He's doing Leelas. वही तो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं This Bhagavan is present in everyone's जैसे hearts. चाहे Whatever ऐसे he कार्य wants, करते जा रहे हैं। this will happen. This Leela will take place. और श्रीमान महाप्रभु इसके पश्चात After that, Mahaprabhu, मानसी गंगा में स्नान करने के he बाद took गोवर्धन की bath in Manasi Ganga and then he did Parikrama of Giriraj. प्रातः काले प्रभु मानस गंगा स्नान गोवर्धन परिक्रमाए करिल प्रयाण गोवर्धन देखि प्रभु प्रेमाविष्ट हया नाचिते नाचिते चलिला श्लोक पढ़िया देखो गोवर्धन परिक्रमा की विधि भी है So here is showing how to make Giriraj Parikrama. How? परिक्रमा करोगे If you do Giriraj Parikrama, लीलाओं की कथा स्मरण करके you have to remember the Leelas of Giriraj and be absorbed in Bhava and Prem. स्मरण करके Remembering these Leelas, dancing and singing. नहीं तो केवल मॉर्निंग एक्सरसाइज नहीं It's not Giriraj Parikrama is not only a morning exercise. में चले जाते Just like if you go for a morning walk, just for exercise, करके आ रहे हैं and you come back one and a half hour later. No. गिरिराज गोवर्धन जो परिक्रमा कैसे करें So how to do Giriraj Parikrama? जब चलने लगे Mahaprabhu, when he for Giriraj Parikrama, गोवर्धन की he लीला को जो है was remembering the Leelas of Giriraj, dancing, जिससे भी हमारी and absorbed in the modes of Giriraj, just like Rupa Goswami and रघुनाथ दास गोस्वामी Raghunath Das Goswami, विश्वनाथ चक्रवर्ती Vishwanath Chakravartipad also. गिरिराज गोवर्धन की They describe in Ashtakams like the glories of Giriraj in such a beautiful way. गिरिराज गोवर्धन Because Giriraj Govardhan, कृष्ण की लीला he के is सभी के क्या है सच्चे दान witness to all the Leelas of Radha and Krishna. ये समस्त लीलाओं के जो है मानो साक्षात रूप में है प्रमाण स्वरूप है इसमें सच्ची न He is the evidence of all the pastimes of Radha and Krishna. और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी कितने सुंदर वर्णन करते हैं निजपति भूजा दंड चक्र भाव प्रपद्म इस प्रकार गिरिराज गोवर्धन की स्तुति आदि करते जा रहे हैं So the Leelas of Giriraj. गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करोगे When you do the Parikrama of Giriraj, how you should do the Parikrama? समय लागे कई बार It might take time, no problem. But आप में अविष्ट you have to be absorbed in the Bhav. आदि कथा चिंतन You have to remember the Leela Kathas. घड़ी से हम परिक्रमा सुन For example, you start the Parikrama in the Dan Ghati, चलते आगे and then after that, you go to Dan Nivartan Kunda. निवर्तन कुंड After the Dan Nivartan Kunda, we go to अनूर गांव में चले Anur Gaon,
Sankarsana Kunda, Sankarsana Kunda also, Govinda Kunda, and many other beautiful places are there where the devotees sit down and they listen to so many Lila Kathas, Harikatha. After that, Govinda Kunda, where Indra, he gave shower in Krishna, like bathed Krishna. And this is the story of Govinda Kunda. And then after that, we also go, and then we walking, we come to Puchari Kelota, where there is the Kunda. Which Kunda? Apsara Kunda and Naval Kunda also. Such a beautiful place. So the Lila there is so beautiful, and the Katha there are also very beautiful. Understand? It's called Puchari Kelota. So the gopis are asking to each other, where is our Shama Sundara? This is one meaning of Puchari Kelota. Another meaning is just like the body, the form of Giriraj is just like the body of a cow, or also just like a peacock taking rest, and the peacock is putting his head to his own body. So there's Puchari Kelota, just like the body, that part of the body is just like facing, like coming back to the other side now, like the. And some also Vrajavasis, they are asking to each other, have you seen Krishna? And Lota means like how they call each other. So like many meanings for Puchari Kelota. There's a very beautiful place. There are Tamal Brikshas, Tamal trees there, and also Kadamba trees. When I used to go with Gurudev, because now, slowly, all of these trees, they are disappearing. They're disappearing, all these trees. Understand? Before, there were Tamal trees, also Kadamba trees. So beautiful, these Lila Kathas. And then, after that, there's the Rasastali, place of Ras. And that cave, which one I just said? The cave of Raghava Pandit. Such a beautiful place. Also the temple of Srinathji is there, Rasastali. And after that also, and we come very close to Giriraj. Understand? In the lunchtime, such a beautiful temple. Where Madhavendra Puripad himself, he established Gopal. Gurudev used to go to that place, and he used to take out his upper cloth, Uttariya, and he used to do pranam. So we remember this place. And he used to, okay, so he used to come very close to like Giriraj, doing the pranam, and also being careful not to step on Giriraj. Of course, there are so many stones of Giriraj. And then also we go to Surabhikunda, where that Prabhu, Gurudev said the name Sanjay, I think, is feeding everyone. Gurudev also is feeding. Then we go to Jatipura, and then according to the possibility, we give bath, we do the Abhishek in Giriraj. Also some Brahmanas are there, and people give donation to the Brahmanas. Such a beautiful place. Understand? Then walking, we come to, we finish the first parikrama, and then we come to the side of Radha Kunda. The road goes to another place, and then we come to Manasi Ganga. Now we do the parikrama in 2 days. So in the first day we do the Giriraj parikrama. Manasi Ganga, we have this darshan. So the devotees take shower in Manasi Ganga, and then the devotees come back lunchtime to the temple, Giriraj temple. Or Giriraj. I'm talking about the parikrama of the first day of Giriraj, like the first part. And then we take shelter in
take rest in Giriraj Govardhan वो temple, आता है, take वो prasad. क्या बोले आरती करते हैं, क्या बोले दीपदान आदि होते हैं। And then also that day we have the दो दीपदान छोटी क्या बोलते हैं, दो दीपदान होती है ना, Deepdan. छोटी दीपदान एक बड़ी दीपदान। So there's the Choti Deepdan and Bari Deepdan, according to the Vraj tradition. महोत्सव आदि करते हैं। Then also Anukut Maha Mahotsav, like that Deepavali, I think, something like that. And then Anukut Maha Mahotsav, and then छोटी परिक्रमा अर्थात राधा then we do the Choti Parikrama, means the small parikrama फिर हम चलते of हैं। Radha Kunda and etc. इसमें हरि कथा भी होती And also है। some Harikatha कितने सुंदर sometimes. मनोरम लगते हैं, So beautiful, isn't it? So nice. है कि नहीं? भक्त लोग सैकड़ों भक्त के साथ हम With चलते हैं, hundreds and कीर्तन करते हैं, गाते billions हैं। of devotees, we do the parikrama, कितने singing. समस्त मनोरम स्थान है। Such a beautiful फिर place. उद्धव कुंड में हम And then पहुंच also we जाते come हैं। to Uddhava Kunda, and उद्धव कुंड में आकर के भक्त we come to Uddhava Kunda, and the devotees, उस समस्त कथा आदि वर्णन they करते हैं। describe the Harikatha, अनेकों कथा जो है so many kathas about Uddhava Kunda. कैसे अर्जुन आदि How पांडव आदि सब Arjuna, साथ में the प्रकट Pandavas, होकर के, manifested also, and ये समस्त कथा आदि वर्णन करते हैं। उद्धव कुंड की अनेकों कथा so many kathas of Uddhava यहाँ Kunda, पर उद्धव आकर के where Uddhava came and he did so much austerities. Gurudev used to say that each blade of grass of Uddhava Kunda is one life of Uddhava. कितने मनोरम स्थान भी है Such a beautiful place. उद्धव कुंड की कथा है। श्रीमद् भागवत में जो तीन हरिदास के बारे में कहा Srimad गया, Bhagavata explains about three Haridasas, हरिदास three को servants of Hari. श्रेष्ठ हरिदास कौन है? And who is the highest Haridas? बोलो Is Giriraj Govardhan. महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। है? उद्धव कुंड में हम लोग बैठते हैं। So we sit down in Uddhava Kunda, such a beautiful place. बहुत मनोरम अच्छा That लगता है। place I like so much, it's so beautiful. है, सारे भक्त When लोग all the जो है, devotees, they उद्धव कुंड की चारी कुंड they are तरफ होकर के they बैठते sit हैं, down ऊपर में surrounding the Uddhava Kunda, isn't it? The devotees sit all over the लोग place. ये ऊंचे पर स्थान The पर Vaishnavas, बैठते they हैं, sit in the बहुत upper आनंद place, होता है। so और much उद्धव blissfully, कुंड के चारी and तरफ the devotees, they sit around the Uddhava Kunda, Vrajavasis, devotees from Bengal, from Delhi, so many devotees from different places. All the devotees, they sit around, उद्धव कुंड की चारी तरफ surrounding completely the Uddhava बहुत Kunda. सुंदर मनोरम कथा भी And such a beautiful place, Harikatha is also spoken there. कथाएं जो है So beautiful. एकदम ब्रजेश सोमम इसमें श्रीमद् भागवत की कथा और All this Srimad Bhagavad Katha and also kathas from many Puranas also they describe. उद्धव कुंड के And then कथा की समाप्त after करके this हम katha, आगे चलते हैं we continue जहाँ पर and हमारे महाराज के एक we मंदिर go जो to the है, temple of that our Maharaj. जहाँ पर हम लोग ये हमारे प्रभु देते हैं प्रसाद Then आदि that देते Prabhu, हैं। he gives prasad to us. है? गौड़िया मठ है ना Agoriya Mata, which is ये there. आश्रम रूपानुग Rupanuga Gauriya Ashram. गौड़िया आश्रम में हम लोग चलते हैं We go there and वहाँ पर also सुंदर महाप्रसाद भी there's सबको a दिया जाता beautiful है। Mahaprasad given मंदिर to everyone कितना there. सुंदर, The temple also is so beautiful, isn't भव्य it? मंदिर है भक्त लोग एक साथ में बैठ करके It's a very big हरि temple कथा and की everybody होती can है, sit परिक्रमा आदि and करते हैं do parikrama, take prasad. और फिर And प्रसाद then, आदि पा करके after taking prasad, breakfast पा करके breakfast, फिर हम लोग we कहाँ चलते हैं go to where? राधा कुंड के तरफ To चलते हैं Radha और Kunda. राधा कुंड में And then धीरे धीरे हम परिक्रमा slowly we करते हैं। start the parikrama of Radha Kunda and फिर राधा कुंड में स्नान take shower in Radha Kunda. सन कुंड में स्नान And आदि then- स्तव स्तुति आदि करके Then shower, ब्राह्मणों को भी bathing दक्षिणा in देना Shama पड़ता है। Kunda and making stavastutis, भाई ब्रज ऐसी है prayers, and also have to give donations to the Brahmana. दक्षिणा देना पड़ता है Because Vraj is like this, you have to give donation to the Brahmanas. दक्षिणा दो You have to give donation to the Brahmanas. Bhagavan also says, गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ब्राह्मणों की सम्मान होती है so we भले तुम्हें honor the ब्राह्मण Brahmana. तुम्हें कटु वाक्य भी बोले Maybe the Brahmana will be rude with you or say bitter words, but still, you should not quarrel with the Brahmana. सुजने भूसुरगणे समंद्र श्रामणी ब्रजद वदंद सरणे सदा दम्मगित्व पुधित राम ओहि संत ढाक चुटुवी अभिजाचे जित पद मन शिक्षा में कहा गया Like Manashika Shiksha explains, ये भूसुर है Brahmanas are bhusur, like gods in earth, है इसलिए on earth, इनको भी like demigods on earth. तुष्टि करो So you should please him, them. करोड़ रुपया ब्राह्मण के दे But दो you can give billion of rupees to the Brahmana. He will not be pleased. You can even make a golden house for him.
house made of gold, but he will not be तथापि pleased. यथाशब्द But still, according to the जिनके possibility, जितना है, 5 रुपया 10 रुपया if you have 5 rupees, 10 rupees, 100 rupees, 500 rupees, you give donations to the Brahmana, okay, है कि नहीं है? isn't it? हम लोग राधा कुंड में स्तुति करके फिर कृष्ण कुंड So we में do the स्तुति आदि stuti, they करके, pray to Radha Kunda, then to Shama Kunda, and then आदि जिसको जैसे those who want to, those who can take shower, they take shower bath, and then we give donations to the Brahmanas, and then we continue आगे चलते चलते कहाँ our पहुंच गए? parikrama, and then we go to छूट गया, कहाँ पर छूट गया? ये राधा कुंड की परिक्रमा के समय पहले हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? So before in the Radha Kunda वो जो Parikrama, रघुनाथ दास गोस्वामी की जो I forgot to speak about this. Then we go to the Bhajana Stali of Raghunatha Das Goswami, Samadhi Stali, and then nearby also we have the हाँ, place of Ananga Manjari, शक्ति आनंद मंदिर Nityananda Shakti Ananga Manjari. Ah yes, Ma Janava Devi, yes, that place, her place is there. और फिर कितने सुंदर स्थान है, और फिर राधा कुंड में आचमन लेकर के Then we do Achaman in फिर हम Radha लोग Kunda. सब कहाँ बैठते हैं? उसी मंदिर पर बैठते हैं, रघुनाथ Then we sit in that temple राधा कुंड महिमा of Raghunath Das Goswami and speaking the glories of Dasa Goswami and Radha Kunda. Vaishnavas explain, श्रील गुरुदेव के समय especially in the time of Gurudeva, our त्रिविक्रम गोस्वामी Trivikram महाराज Goswami Maharaj और श्रील जनार्दन गोस्वामी महाराज and Srila Janardhan Maharaj, Srila Gurudev, समस्त कथा आदि बहुत सुंदर सुंदर कथा जो है श्रवण करा they used to tell beautiful उसी katha कथा there. को स्मरण करते हैं, अभी तक भी उसी परंपरा में So remembering the Hari Katha, in this parampara, in this tradition, all our devotees, like for example, Parivrajaka Maharaj, Ditta Maharaj, Srila Madhava Maharaj, and Shri Siddhanti Maharaj, and our Rasananda Prabhu, सिद्धर महाराज our Shidhara Maharaj, वैष्णव लोग all the Vaishnavas, they, इसी कड़ी में मेरा कभी समय and नहीं also आया, sometimes I also get some time to speak there. I like, कभी कभी प्रसाद नहीं मिले कोई if I get some prasad, good, if I don't get, also okay. दो शब्द बोलने के लिए But anyway, I also get the chance to speak. तरसते रहते हैं सब I'm eager. हैं, राधा कुंड की इतने सुंदर I mean, all the devotees are eager to speak two words because परिक्रमाते ही फल है Raghunath Das Goswami, Radha Kunda, डुबकी लगाया just to going to the Kunda and taking shower, this is not actually Kunda Parikrama. कैसे है How to really take shower of the place with the Harikatha. जिसके जिस यही तो जिसको कहते हैं दिव्य प्रसाद तो This is Dibba Prasadata, means कृष्ण Krishna himself, राधा जी की कृपा to get the mercy of Srimati इस Radhika. कुंड में Krishna, संधार 3 times a day Krishna takes bath in Radha Kunda, in the Radha Kunda. Such a beautiful place. की कथा So all these Harikathas, कैसे प्रकाश है how Radha Kunda manifested. शिव खोर भी है Also another place I forgot to speak about Shiva Kod. एक दिन कुछ कुत्ता जो है There was some jackal, you know the animal, करने लगे and some dog आक्रमण करने लगे attacked this jackal. किसी तरह से मर गया And somehow the dog died. And then what happens? स्वरूप धारण करके This dog manifested the transcendental form. धाम में चले Oh, sorry, or the jackal manifested the transcendental form when after dying भी साधारण नहीं है and went to transcendental world. Because actually those who are staying the Dham, they're not ordinary. That's why you have to do pranam to all of them and ask their mercy, like Bhaktivinoda Thakur says. हरे कांदिया बेराबो देह सुख छाड़ी नाना लता तोरु तोली। एक कीर्तन के ऊपर महाराज जी तो आइए और व्यवस्था करो। Maharaj came, go quickly arrange. कहाँ हो? अच्छा, तुलसी वृंदा देवी के आने के लिए लाने के लिए थोड़ा प्रयास करें। अच्छा, इसलिए उसी प्रकार प्रमाण प्रणाम करके राधा कुंड बीच में एक कथा रह गया है। चलते चलते आगे हम कहाँ चलते हैं? Then we are going, महिमा कथा आदि श्रवण के and बाद after listening to the glories of Radha Kunda, we वहाँ पर जो है सनातन गोस्वामी पाद go to that place where Sanatana Goswami used to stay. उसके बाद जो है जहाँ पर रघुनाथ And then after that, भक्त लोग स्नान आदि करते हैं, इसके कहा जाता है the devotees and Raghunath Das Goswami विवाह करते हैं। used to take bath, jihad, that place. ऐसा नहीं, वहाँ पर एक कुआं है, There's a well, कुएं से like the पानी tongue निकल of रहा है, Giriraj. स्नान आदि करते हैं। So फिर आगे people चल take करके the तमाल water from that well and do achaman. कहा जाता है, जहाँ पर Achaman. चैतन्य महाप्रभु And also there's some कृष्ण tamal कुंड के tamal tree चैतन्य महाप्रभु विश्राम where किया। Mahaprabhu used to take rest, in that place where Mahaprabhu discovered the Shamakunda. And then we do pranam, and then again
now we come to the राधा कुंड की Sangam of Radhakunda, means the junction of Radhakunda and Shyamakunda, and then राधा जी की कुंड जनी राधा कुंड की first we go to Radhakunda and do Stavastuti prayers to Radhakunda. आकर के The Brahmanas कराते हैं क्या संकल्प came आदि कराते and हैं also ब्राह्मण की वृत्ति कराते हैं help us making some sankalpa or bathe in the Radhakunda with Panchamrita, with 5 kinds of ingredients. And we do the Stavastuti Radha Kripa Kataksha. कृष्ण कुंड में आकर And then we go to the Krishna Kunda, other side. And what do we do? कथा आदि स्तुति आदि करते हैं We also do some stuti, some prayers. In the Radha Kunda we pray with Radha Kripa Kataksha. And in Krishna Kunda we pray with नमामि नंदनमस्तकम Namami Nandanandashtakam. All this very beautiful going on. And then also after giving donation to Brahmanas, because the Brahmanas are like chasing us for money. I mean for donation, then we give and then we continue. चलते चलते And then we करते करते हम do the kirtan slowly and walking. We come to Kusum Sarovar आकर के थोड़ा बहुत and then आचमन आदि करके we do some achaman, take some rest, some harikatha. What is rest? The rest of the Vaishnavas means harikatha. फिर हम चलते हैं नारद कुंड की तरफ चलते हैं Then we go to Narada Kunda, कि हम नहीं जाते हैं but we don't go to Narada Kunda the same day. तो विश्राम के स्थान There's some place for taking rest. We sit down a little bit over there and then सरोवर की कथा फिर हम श्रवण करते हैं we listen about Kusum Sarovar. Some devotees also do some kirtan and then dancing, singing. Then ऊपर में चिलचिलाते in the scorches rays of midday, 11-12 तो बज already 11:30 a.m. this time, भी बज जाते sometimes even 1 p.m. already at this time, नित्य गीत आदि करते dancing, singing, and उस दिन हम किल्लोल कुंडल है ना वो। so there's also the Kilol Kunda on the way back. और इधर रह जाते हैं दाहिने की तरफ रह जाते हैं ग्वालपुर आदि इसको सब प्रणाम करते So in the right side also this Gwalpukur, गोवर्धन मठ में आ we do pranam and then we come to Giriraj Govardhan. करके फिर भक्त लोग प्रसाद And then devotees they take prasad आदि करते हैं and they take a rest. And then after that, फिर शाम के समय evening time, वैष्णव लोग सुंदर the Vaishnavas पदावली आदि जो है कीर्तन आदि they glorify many kirtans from Padyaval etc. And then also the Harikatha. महाराज की जय। फिर कहने की तात्पर्य इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु What I want to say is that Mahaprabhu, परिक्रमा किया he did parikrama of Giriraj. कि यही परिक्रमा की विधि दिखा रहे हैं So this is how to make the parikrama. Parikrama. इसलिए प्रातः काले प्रभु मानस गंगाय परिस्नान गोवर्धन परिक्रमाय करिल प्रयाण गोवर्धन देखी प्रभु प्रविष्ट है नाचिते नाचिते चरिला श्लोक पढ़िया इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्य आदि करते हुए Mahaprabhu dancing and singing, absorbed in Bhav. श्रीमद् भागवत Mahaprabhu है वो वेणुगीत के श्लोक recited verses from Venugit. करने लगी है क्या हंताय द्रिय बोला हरिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानंतनति सह गोपगणै तयोर्जत पानीय सुजवस कंदर कंदमूलई इस श्लोक को हम कल इस शाम को हम Today in the evening time, we will describe this katha very beautiful. इसी पर इतने सुंदर Gurudev in such a beautiful way, व्याख्या किया he described these है things, all these kathas about Haridas, वास्तव हरिदास how Giriraj, who is the real, actual Haridas, servants of Sri Hari. What are the symptoms of Haridas? एक होता है One is Vaishnava Das, servant of Vaishnav, गुरुदास Guru Das, servant of Guru. Another thing is to be क्या हरिदास Haridas, servants of Sri Hari. सबसे सर्वश्रेष्ठ And the highest Haridas, who is the highest Haridas? Giriraj. महाराज की Jai. जय जय श्री राधेश Jai Sri Gurudev ki Jai.